आणि हळूच पुन्हा मन शरीराकडे फिरता शिथिलता शरीरातली त्याचा अनुभव. हळूच डोळे उघडा. मी दुर्गादास सावंत, इंडियन योग असोसिएशन महाराष्ट्र चॅप्टरचा व्हाईस चेअरमन, आजच्या या व्याख्यान मालिकेकरता सर्वांचं स्वागत करतो. आजचं जे पुष्प गुंफणार आहेत ते आपले श्रीकृष्ण म्हस्करजी, जे महाराष्ट्र IYचे सेक्रेटरी आहेत. आतापर्यंत वेगवेगळ्या विषयावरती जे सभासद संस्था आहेत महाराष्ट्र चॅप्टरच्या IYच्या, त्यातील वेगवेगळ्या वक्त्यांची विभिन्न विषयावर भाषणं झालेली आहेत. महाराष्ट्र चॅप्टर IYचं हे सगळ्यात पूर्वी म्हणजे राज्यस्तरीय म्हणतो आपण त्याला, शाखा त्या चालू झाल्या अगदी सगळ्यात अगोदर 2018 मध्ये महाराष्ट्र शाखा चालू झाली. त्यानंतर जवळजवळ सगळ्याच राज्यांची IYच्या शाखा चालू झालेल्या आहेत. आणि महाराष्ट्र चॅप्टरने ही एक व्याख्यानमाला चालू केली. एक आवाहन करण्यात येत असतं की मोठ्या संख्येने IYचे सभासद आपण सगळ्या ज्या महाराष्ट्रभर संस्था आहेत, व्यक्ती आहेत, एक व्हॉलंटियर सभासदच असतं, मेंबरशिप असतं 250 रुपये. दुसरे योग प्रोफेशनल म्हणजे व्यावसायिक योग सभासद IYचे, म्हणजे जे शिक्षक आहेत ते, यांनी कुठल्या ना कुठल्या संस्थेमध्ये शिक्षकाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला आहे. आजकाल IYचं म्हणजे YCB सर्टिफिकेशन पण असतं त्याकरता, त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करण्याकरता. आणि त्याशिवाय एक लाईफ मेंबर असतं, त्याची 10,000 रुपये फी असते. तसंच ज्या लहान मोठ्या संस्था महाराष्ट्रभर आपापल्या परीने कार्य करत असतील त्यांच्याकरता एक संस्थांचं सभासदत्व अशी एक आहे, म्हणजे 15-25,000 रुपये त्याची फी असते. कायमस्वरूपी म्हणजे एकाच वेळेला भरायचे असतात ते, आणि कायमस्वरूपी ते सभासदत्व असतं. तर आपण आजच्या विषयाकडे वळूया. जसं मी म्हणालो, डायनॅमिक्स ऑफ हेल्थ अशा विषयावरती महाराष्ट्र चॅप्टर IYचे सेक्रेटरी श्री श्रीकृष्ण म्हस्करजी, जे घंटाळी मित्रमंडळ ठाणेचे योग विभाग प्रमुख सुद्धा आहेत, आणि जवळजवळ 75 मिनिटं ते प्रत्यक्षात बोलणार आहेत. त्याच्यापूर्वी IY महाराष्ट्रच्या जॉईंट सेक्रेटरी सौ नेहा केरुरे या त्यांचा परिचय करून देतील. शेवटी आमचे डॉक्टर सतीश पाठक, जे सिनियर व्हाईस चेअरमन आहेत IY महाराष्ट्र चॅप्टरचे, ते आभार प्रदर्शन करतील. असा हा कार्यक्रम आहे एकूण 1.5 तासाचा. तर मी प्रथम नेहा केरुरे मॅडमना विनंती करतो की श्रीकृष्ण म्हस्कर सरांची त्यांनी ओळख करून द्या. Thank you, sir. Thank you so much, sir. It's my pleasure to be here in this IY session, and with equal pleasure, I am going to introduce Maskar, sir. Mr. Sri Krishna Vasanta Maskar. He is MCOM in Management, LLB, CAIIB, Diploma in Financial Management, Diploma in Training and Development, ISTD, New Delhi. He has worked as a manager in United Western Bank for 20 years and also in Thane Janata Sahkari Bank for 14 years. Besides, he has served Foreign Exchange Dealers Association of India, that is FEDAI, as Vice President and then Secretary for 4 years. After successful completion of diplomas in Advanced Teachers course from Indian Yoga Society, Sagar, Madhya Pradesh, and Diploma in Yoga Education and in Therapy Instructors Diploma, he has completed MA in Yoga Shastra from KKSU, Ramtik. He is associated with Ghantali Mitra Mandal,
since 1980, and he is now heading the Department of Yoga after the founder of the institute, that is late Shri Yogacharya Anna Vareji. He has been a part of various projects by the institute applying yoga for various segments of society. To mention in particular he was the part of the project Yoga for Jail Inmates with Yogacharya Anna Vareji. He's having a vast experience as a head examination department of yoga education diploma course of Ghantali Mitra Mandal for more than 2 decades. And during this period, more than 4,000 students have become teacher under his guidance. He has expertise in the field of teaching, demonstration, examining with an experience of 41 years. A book on yoga, that is No Yoga, Live Yoga, authored by him and published by Ghantali Mitra Mandal, is very popular amongst yoga lovers. Presently, he is honoring the post of Secretary of Indian Yoga Association, Maharashtra chapter. Besides, he is the editor of Yoga Sindhu, a digital trimester published by IYA Maharashtra chapter. For his contribution in various capacities in the field of yoga, he has been awarded Yoga Ratna Puraskar by New Age Yoga Mumbai. So welcome, sir, and over to you. Hari Om. Before I start my deliberation, I offer my humble naman to our Guruji, Yogacharya Sri Krishna Vare, because of whom we are all having some sort of recognition in the field of yoga. A great visionary and yoga lover, he has created a nice legacy of number of yoga teachers who are committed to work for Ghantali Mitra Mandal honorarily, and it's a pleasure to be associated with this great institution who has recently completed 50 years of yoga department. Unfortunately, the celebration was not possible because it was COVID period. So 1971, our yoga department was developed or founded by late Kaba Sahasrabuddhe, who actually brought yoga in Thane city, to be frank. Along with him, Hatha Yogi Nikam Guruji also was his contemporary. But interestingly, no institution has got any sort of rivalry of any type, and all are working in a very common direction of making the life of common man comfortable. So that institution also is founded same time, around maybe 1 or 2 years here and there. So 71 to 2021, because of COVID, we could not meet the people on open forum, but we had conducted 12 webinars in 1 month per month, like that. So from January to December 21, we had conducted 12 webinars on various topics, inviting various experts from yogic field. Of course, having some commitment to the knowledge, because there are so many yoga spreaders, no doubt, but everybody may not be having that same level of commitment for spreading the yoga as a matter of mission. So even Durga Dasi also has been one of the participants of our webinars. 4 days back only, we had a very beautiful function of Yoga Vidya Niketan, who have entered their 50th year. A fantastic function was organized by the institution in Yoga Bhavan Vashi. And it was really a great pleasure to be there with all the people loving yoga. So with this brief introductory part, let us start with the topic, dynamics of yoga, of health. You may be aware that exactly after 10 days from today, there will be yoga, not yoga, but health and awareness of the health, Jagatik Swasthya Din, Yoga Health Day, or World Health Day is celebrated on 7th April every year. This day is primarily connected or focusing
इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का क्या महत्व है, उसके बारे में लोगों में सजगता निर्माण करना, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को परिचित करवाना, और उसको पाने के लिए जो भी उपाय हम लोग कर सकते हैं या जो भी मीन्स हम लोग उसको ले सकते हैं, उसके बारे में पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। Unfortunately, this day is only celebrated on a day, on a particular day. But as per my thinking process, this is the day everybody should perform every day. We have got the right to be healthy right from the moment we take our first breath. And we have to remain healthy throughout our life. But this is not only by taking the oath or taking the vow to make like that, but we have to really do some efforts for that. So the concept of health is having twin brother स्वास्थ्य एंड अस्वास्थ्य। ये दोनों जुड़वे भाई बहन है या भाई है, दोनों कुछ भी बोलिए आप। जब किसी भी चीज के पीछे अ लगता है तो कभी कभी उस वर्ड की क्वालिटी बढ़ती है या कभी कभी उसकी क्वालिटी घटती भी है। पूर्ण को हम लोग अ लगाएंगे तो अपूर्ण हो जाता है, पूर्व को लगाएंगे तो अपूर्व यानी उसकी क्वालिटी बढ़ती है। तो उसी हिसाब से अगर स्वास्थ्य के बीच हम लोग अ लगाएंगे तो वो जाता है अस्वास्थ्य। So many people know, so many people talk about the aswasthya, but very few are focusing on how to reduce that aswasthya position and gain the real swasthya. So the concept of swasthya is very much imbibed in our system of Indian culture. भारतीय तत्वज्ञान में या भारतीय जीवन पद्धति में स्वास्थ्य को अनन्य साधारण महत्व है, और वो महत्व सिर्फ वर्ड के बारे में या वर्ड के या शब्द के माध्यम से नहीं है। तो जीवन शैली कैसी बननी चाहिए, हाउ वी शुड मेक आवर लाइफ एज ए हेल्दी लाइफ थ्रू आउट द एवरी मोमेंट। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य के पैरामीटर्स क्या है, उसके परिमाण क्या है, अस्वास्थ्य क्यों निर्माण हो जाता है, अस्वास्थ्य को दूर करने के लिए हमारे साथ कौन से साधन उपलब्ध है, और उन साधनों में योग कैसे उपयुक्त है या योगा का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा विचार करेंगे। सो WHO, which has got lot of importance in last 3 years, especially from COVID, WHO has been known by even every person in the roadside of the city or any part of the life or world. जागतिक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, World Health Organization, has given a definition of swasthya or health. What they say about the health? A state of well-being or complete physical, mental, social well-being. यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थिति। well-being का मतलब है सुस्थिति, and not merely absence of diseases. यानी सिर्फ रोगों का अभाव, इसका मतलब स्वास्थ्य नहीं है। तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर सुस्थिति को लाना, सुस्थिति में ये तीनों घटक रहना, इसको हम स्वास्थ्य कह सकते हैं। ऐसा उन्होंने उसका एक डेफिनेशन तैयार किया है, उसकी संज्ञा तैयार की है। उसके और एक पैरामीटर उन्होंने ऐड किया है, वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअलिटी के बारे में हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर देश का अपना अपना एक पहलू होता है। दे हैव गॉट देयर ओन थॉट प्रोसेस। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज नॉट secluding from the society, not going away from the society, going into jungle, but spirituality is knowing self in a real manner. सही मायने में अपने आप को समझना, अपने आत्मा की तरफ जाने की कोशिश करना, ये अध्यात्म का एक परिमाण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो प्राइमरीली हेल्थ के बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो वी हैव टू डेट बैक विथ आवर इंडियन कल्चर। भारतीय विचारधारा जो है, इसमें सबसे प्राचीन हम लोग मानते हैं कि आयुर्वेद है। आयुर्वेद ने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से विचार किया है। उसके बारे में उन्होंने कुछ बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है।
आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य का मतलब क्या है? समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया। पहली लाइन जो है वो ब्रॉड पैरामीटर्स ऑफ द हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में जो डोबल परिमाण है, पैरामीटर्स है, उसके बारे में बात करती है। समदोष, त्रिदोष शरीर में होते हैं। दोष का मतलब डिफेक्ट नहीं है। दीज आर द 3 facets of our life or our human existence. कफ वात पित्त समदोष, ये तीनों ही दोष या तीनों ही पैरामीटर्स को सम अवस्था में पाना। सो देयर शुड नॉट बी एनी डोमिनेंस ऑफ आइदर कफ पित्त और वात, बट दे ऑल शुड बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सम अग्नि, अग्नि ऐसा माना गया है कि आयुर्वेद के हिसाब से 13 प्रकार के अग्नि हमारे शरीर में होते हैं। हमें मालूम है सिर्फ जठर अग्नि, क्योंकि उसको बुझाने के लिए तो हम लोग पूरी दुनिया यहाँ की वहाँ करते हैं। Nobody works for the mental bliss or mental peace. Everybody works for pacifying the जठर अग्नि। तो जो भी अग्नि हमारे शरीर में स्थित है वो समावस्था में होने चाहिए। ऑल द अग्निज इन द बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम। समधातु मल क्रिया, समधातु मीन्स सप्त धातुओं का निर्माण हमारे किसी भी ऊर्जा लेने से होते हैं। हमारे ऊर्जा के 3 स्रोत हैं, हमें मालूम है, हवा, पानी और अनाज, खाना। ऑल दिस फॉर्म 7 टाइप्स ऑफ धातुस। और ये धातु जो होते हैं, ये धातु हमारे शरीर का चयापचय, मेटाबॉलिज्म बैलेंस रखने में बहुत सहायकारी होते हैं। तो उनमें अगर कोई उल्टा पुल्टा हो गया तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके लिए समधातु मलक क्रिया, मलक क्रिया मीन्स एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन हमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में हम लोग जानते हैं कि सुबह में ओके, दैट इज नॉट द ओनली थिंग विच इज मलक क्रिया के बारे में। मल मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, किसी भी तरह की शरीर में अशुद्धि जो होती है उसको समावस्था में बाहर निकालना, सांस को बाहर निकाल देना। पानी जो हम लोग लेते हैं उसका एक्सक्रीशन होता है बाय वे ऑफ स्वेट, बाय वे ऑफ यूरिनेशन। और जो भी सॉलिड हम लोग खाते हैं खाना, उसका हमें मलक क्रिया के हिसाब से हम लोग उसको शरीर के बाहर निकाल देते हैं। तो शरीर में जो चीज़ रहनी नहीं चाहिए वो शरीर से बाहर फेंक देना, उसको शरीर से दूर करना, ये मलक क्रिया के बारे में हम लोग कह सकते हैं। तो समदोष समाग्नि से समधातु मलक क्रिया। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यादि। प्रसन्न यानी ब्लिसफुल, दे हैव नॉट सेड प्लेजर। प्लेजर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मीन्स। साधन के ऊपर हमारा प्लेजर डिपेंड करता है। प्लेजर यानी बहुत ही सुपरफ्लुअस लेवल का आनंद होता है, लेकिन ब्लिस जो होता है, परमानंद जिसको वो हमेशा अंदर से इवॉल्व होता है। तो अंदर से आने वाला जो हमारा आत्मानंद है, वो आत्मानंद, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, 3 फैक्टर्स। आत्मा की स्तर पर हम प्रसन्न होने चाहिए। इंद्रिय यानी हमारे लिम्स, हमारे कार्य करने वाले कर्मेंद्रिय जिसको हम कहते हैं, और मन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मन का। माइंड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। मन के बारे में जितना आप सोचोगे उतना कम है। सो दे हैव गिवन द सेकंड लाइन एज ए पंचिंग लाइन, यू कैन से, फॉर गेनिंग द स्वास्थ्य। समदोष समग्निश्च समधातु मल क्रिया, ये जो पूरे पैरामीटर हो गए शारीरिक स्तर पर। ऑन बॉडी लेवल व्हाट वी शुड बी हैविंग, वी शुड बी हैविंग बैलेंस इन आवर त्रिदोष, हैविंग बैलेंस इन आवर अग्निज, having balance in our dhatus and mala kriya, but that is not sufficient to recognize anybody as a healthy person. He must be blissful on, प्रसन्न कहाँ होना चाहिए, आत्मा, इंद्रिय और मन। ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसन्नता जो होती है वो आत्मा की स्तर पर होनी चाहिए, यानी इनर ब्लिस जिसको हम कहते हैं। वो हम लोग रिफ्लेक्ट कहाँ से करते हैं, हमारी इंद्रियों से करते हैं। So the means of expressing the bliss are our indriyas, and who motivates our indriyas to express is our mind. तो मन के हारे मन जीत है, मन के जीते मन के हारे हार है। तो mind is the only thing which makes everything correct or incorrect.
तो ये योग की जो या स्वास्थ्य की जो व्याख्या की गई है, ये आयुर्वेद की व्याख्या बहुत ही परिपूर्ण हम लोग कह सकते हैं, इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बिकॉज एवरी पर्सन हैज गॉट राइट टू बी हेल्दी। अगर एक व्यक्ति स्वास्थ्यपूर्ण है तो उसके साथ जुड़ा हुआ उसका कुटुंब यानी फैमिली वो स्वास्थ्यपूर्ण हो सकता है। अगर वो फैमिली स्वास्थ्यपूर्ण है तो फैमिली के साथ जुड़े हुए बाकी लोग, समाज के अन्य घटक जो है वो भी स्वास्थ्यपूर्ण हो सकते हैं। और ये सभी चीजें WHO के जो डेफिनेशन के साथ पैरेलली जाने वाली है। सो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको हम लोग समझने की अगर कोशिश करेंगे तो व्हाट इज द स्वास्थ्य, व्हाट इज द हेल्थ, वी नीड टू हैव 2 पैरामीटर्स ऑन दैट। फर्स्ट इज शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, एंड सेकंड इज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि योग में जो साधना करते हैं उनमें अंतराय यानी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। तो ऑब्स्टेकल्स में सबसे पहला ऑब्स्टेकल है व्याधि यानी इल हेल्थ। फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट प्रॉब्लम which destroys or which disturbs your yogic sadhana, it is said in Patanjali Yoga Darshan by Patanjali that व्याधि स्त्यान, बाकी 9 अंतराय उन्होंने बताया, उनमें से सबसे पहला व्याधि है। व्याधि का मतलब एलिमेंट्स, डिसऑर्डर्स यू कैन से। आजकल डिसीजेस का पर हम लोग यूज शब्द का वापर हम लोग कम करते हैं, फिर भी ईज एंड ऑर्डर both indicate our lifestyle. What is not at ease is called a dis-ease, and what is not in order is called a disorder. जो चीजें ऑर्डरली होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? समदोष समाग्निश्य, ये ऑर्डरली होने चाहिए। दे शुड बी इन ऑर्डर, दे शुड वर्क इन टैंडम, एक साथ जुड़ के उनको काम करना चाहिए। लेकिन वो जब नहीं होते तो हम उसको कहते हैं डिसऑर्डर। और दूसरा है dis-ease. Something is disturbing me, and because of that something which is disturbing me, I am not feeling ease, I am not easily enjoying the life. So उसको हम कहते हैं dis-ease. तो दोनों ही एक ही कॉइन के 2 पहलू ऐसा हम लोग मान सकते हैं। सो प्राइमरीली फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य और मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के 2 पहलू हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी हमारा स्ट्रक्चरल पैटर्न। अगर भगवान की दया से हमें सब कुछ ठीक ठाक मिला है तो यू कैन से दैट स्ट्रक्चरली आई हैव नो प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरली मैं बहुत ही स्थिर हूँ, सभी ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे है। सो द प्रॉब्लम ऑकर्स नॉट इन द स्ट्रक्चर बट द प्रॉब्लम कैन ऑकर इन द फंक्शन। कार्यात्मक दोष निर्माण हो सकते हैं लेकिन रचनात्मक दोष नहीं है। ये हम लोग आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन जिनके बारे में जिनके जीवन में रचनात्मक दोष भी है तो उनका पूरा जीवन अस्वास्थ्यपूर्ण होता है क्या? एक्चुअली ऐसे हम लोग कंक्लूजन में ले ला सकते हैं। वी कैन नॉट हैव द कंक्लूजन लाइक दैट। In fact, those who are having some physical ailments or having some lacunas in the physical development, they are more healthier than normal people who are having everything in place, because they value what is not they are not having, and we always disvalue or we always are not giving proper value to the facts which we are having. So शारीरिक स्वास्थ्य जो होता है वो हमारे शारीरिक रचना के साथ जुड़ा है और शरीर के कार्य के साथ जुड़ा है। So it is connected with the structural pattern of the body and functional pattern of the body. It depends on 3 major factors: आहार, विहार और विश्रांति। आहार का मतलब है डाइट, डाइटिंग करना, इसका मतलब आहार नहीं है। आहार मीन्स सप्लाई ऑफ द एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत देने वाले 3 घटक, हवा, पानी और खाना। पहले 2 उसके बगैर हम लोग जी नहीं सकते। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सम डेज, वी कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर सम आवर्स ऑल्सो, बट वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट द एयर इवन फॉर 10 seconds. सो शारीरिक स्वास्थ्य को जो आहार मिलता है वो हमें लगता है खाने के माध्यम से मिलता है, लेकिन नहीं।
खाने के साथ साथ पानी और हवा, ये दो भी स्वास्थ्य को वर्धित करने वाले, स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम करने वाले घटक है, जिसको हम कंबाइन कर सकते हैं कंसेप्ट के आहार में. सो प्रॉपर डाइट, टाइमली डाइट, बैलेंस डाइट, वेज नॉन वेज इज नॉट द कंसेप्ट, नॉट द इश्यू टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है. व्हाट इज गुड, व्हाट इज बॉड, what is bad is not the point of discussion at this point of time, because we have no right to comment on what is right diet, what is wrong diet. Whatever nourishes me, whatever gives me energy is a good diet for me. तो आहार is a very important concept. आहार के माध्यम से बहुत सारे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं या होते हैं, ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में उसका रेफरेंस है. योग वासिष्ठ में उसके बारे में बहुत ही क्लियरली लिखा है. अजीर्णत्व, कुजीर्णत्व और अतिजीर्णत्व, ये 3 डाइट के प्रॉब्लम से होने वाले पेट के रोग है, पेट के प्रॉब्लम से. अजीर्णत्व, कुजीर्णत्व और अतिजीर्णत्व. तो ये आहार बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हमारे जीवन में है, जो स्वास्थ्य रखता है हमारे शरीर का. दूसरा है कंसेप्ट विहार. विहार का कंसेप्ट, विहार का मतलब क्या है? हैविंग सम बॉडी मूवमेंट्स. व्हाटएवर कैलोरीज वी कंज्यूम, they need to be spent, and they are spent by merely some activities. इसका मतलब पूरा दिन व्यायाम करते रहना है क्या? नहीं. Calculated and focused body movements having involvement of mind is विहार. कोई भी शारीरिक गतिविधि हम लोग जो करते हैं उसमें सिर्फ शरीर माध्यम है, और उसका साधन जो है, उसका जो चलाने वाला है, वो है हमारा मन. तो मन के साथ की हुई जो भी शारीरिक क्रिया है उसको हम विहार कह सकते हैं. सो विहार इज अ कैलकुलेटेड बॉडी एक्टिविटी विथ हैविंग कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड एंड हैविंग कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ ऑल डब्ल्यूज, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सभी. तो विहार इज सच ए कंसेप्ट which leads to the consumption of calories at one side, but at the same time giving some bliss or pleasure to the mind. I climbed the hill is also physical activity, but when you say I have done Giri Vihar, it gives you completely different parameter. हम लोग रोइंग करते हैं, as an exercise we do it, but when we say मैंने नौका विहार किया, इसका मतलब मैंने उसका लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए उस नौका का विहार किया. So vihar is nothing but an body action connected with the mind for enrichment of mind at the cost of spending some energies of the body. और तीसरी है विश्रांति. विश्रांति का मतलब प्रॉपर रेस्ट. N number of sleep hours is the proper rest, is a very simple equation by so many, but it is not necessarily the sleep. Sleep time is nothing but a कार्यवाद हम लोग कह सकते हैं. कुछ नहीं करना है तो सो गए. Certain things don't allow you to sleep, correct? And when you get up, you cannot sleep again to complete that things. तो रेस्ट का मतलब है change of work. A beautiful way of explaining rest. Somebody has said that change of work is a rest. What does it mean? यानी केवल शारीरिक स्थिति बदलना, शरीर के क्रिया को बदलना, इसका मतलब विश्रांति है? नहीं. Whenever we change any work, whenever we shift from X work to Y work, what we exactly do is nothing but the change of mindset. मानसिकता का बदल ये रेस्ट होता है. हमारे जीवन में नॉर्मली पीपल कहते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने 6 घंटा सोया हूँ तो मुझे रेस्ट मिलती है. रेस्ट इज नॉट लाइक दैट. रेस्ट इज नथिंग बट withdrawing the mind from the action of one and trying to apply it to the action of other. But before you apply it to other point, the duration between these two is rest, and that rest is not to the body, it is always to the mind. चेंज प्रोसेस. जैसे हम लोग देखते हैं कि गवई होते हैं, गाने वाले होते हैं, द सिंगर्स, दे प्रेजेंट वन राग, दे टेक द पीपल टू सच ए लेवल ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ दैट राग. दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन दैट. Within 2 minutes they change to different rag.
and they take you to a different world altogether. This 2 minutes duration is rest. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेस्ट के बारे में हमें जानना चाहिए कि रेस्ट इज नॉट नेसेसरी द लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप. You will definitely find anybody who is having 8 or 9 hours sleep not very energetic when he comes out of the sleep. He also wants that और थोड़ा सोएंगे तो अच्छा रहेगा. So और थोड़ा कितना है? It depends on every individual. So it does not necessarily mean that when you sleep for long hours, you get a proper rest. Rest is nothing but changing the mind's course, mind's way of thought process. And for that, you take a small pause. And that pause makes your entire existence to come at a state of equilibrium. So rest is nothing but the requirement of body, definitely to some extent correct, but not necessarily fully correct. You also require to get the change in the state of the mind, emotions, intellect and spirituality. ये सभी चीजों के दो पहलू में जो अंतर होता है वो रेस्ट का होता है. तो विश्रांति का मतलब है प्रॉपर रेस्ट, एंड प्रॉपर रेस्ट इज नथिंग बट एवरीबॉडीज रिक्वायरमेंट. हर आदमी की वो एक आवश्यकता है. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू टेक द रेस्ट इन अ प्रॉपर वे. व्हाई? बिकॉज वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which works as per the international timings. No European will work during your working hours. No American will work during your working hours, but we can work in working hours. So we have total timings which are different than the normal rest hours. Normally we sleep in the night, expected to sleep in the night. But so many people complete the work in the night. They have the night duties to perform. So that is not the rest. When they sleep during the day, when they are supposed to be active, they remain passive. And they treat that as a rest. It is not correct. So आहार विहार और विश्रांति ये तीन घटक हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम करते हैं. ये सेंटेंस दो तरफ से हम लोग सोच सकते हैं, देख सकते हैं. Because of the proper diet, proper exercise and proper rest, our health can improve. But if there is imbalance in either of them, I will not say all of them. Even if there is an imbalance in either of them, your health can get distorted. तो अगर गलत आहार करेंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है. कुछ व्यायाम ही नहीं करेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे और ज्यादा करेंगे तो भी अपना स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है. It will lead to muscle fatigue or it will lead to tamogun. When it becomes more activity, it becomes rajogun. When it has no activity, it becomes tamogun. We should be using our body with sattvagun dominance. And rest is such thing that it should give you the relief from exertion which we have done by some activity. तो शारीरिक स्तर पर आहार विहार और विश्रांति ये तीनों घटक स्वास्थ्य को सुधारते भी हैं और बिगड़ते भी हैं. अब दूसरा फैक्टर है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ. माइंड cannot be shown. We can show the body, we can show the internal organs of the body, we can experience them, we can touch them, we can sense them, we can use them, but we cannot show the mind. But we cannot also reject the fact that mind doesn't exist. मैं मन में कोई नहीं है, मन वाले कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है, ऐसा हम लोग कह नहीं सकते. So that is a very interesting aspect. The thing which is not seen, which you cannot show in physical form, which has no any organic structure, but it impacts every organic or existing thing in the world. So मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो भी हमारे बहुत ही important concept का स्वास्थ्य के हिसाब से देखेंगे. So it's one of the very important concept of स्वास्थ्य, mental health. On what it depends? विचार, विकार और विवेक. तीनों चीजें again unseen. Can you see the thoughts? No. But can you say that my mind is without any thoughts? No. Vikar, manovikar are nothing but behavioral impacts. Something goes disturbing your mind and I act in a very typical manner which is not accepted by the normal people. So vikar का मतलब है मनोविकार. और विवेक, conscience. विवेक जो होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनैलिटी, विवेक के माध्यम से देखेंगे तो देयर इज नो पैरेलल वर्ड इन इंग्लिश. You cannot use different word. You cannot translate Vivek. You can just give something which is going something parallel or close to that word. Vivek is nothing but rational thinking, rationality. So, vichar. What is the thought of, what is the work of mind? मनन करने वाला मन, चिंतन करने वाला चित्त और बोधन करने वाली बुद्धि. तीन फैक्टर्स अनसीन है लेकिन तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं. बट व्हाई दिस चिंतन और बोधन नहीं होता है? ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आवर माइंड इज नॉट अलाउिंग आवर चित्त और आवर इंटेलेक्ट टू वर्क एट ऑल. तो विचारों का सेपरेशन और विचारों का ओवर एक्सप्रेशन, अति विचार या कुंठित विचार, बोथ ऑफ देम आर डिसाइडिंग द क्वालिटी ऑफ माय मेंटल हेल्थ. तो विचारों की दिशा कौन सी है, विचार प्रणाली क्या है, विचार करने की क्षमता कैसी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली विचार को अमल में लाने की इच्छा कितनी है. ये सभी फैक्टर्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य के विचार के घटक के ऊपर परिणाम करते हैं. I have a lot of thoughts in the mind, but all are baseless. If you analyze the thoughts which come in your mind during the lively, or you can say during your awakening state, the stop of the thought is not even in sleep. विचार हमारे जीवन में continuously चलते रहते हैं. Even in sleep, we are having thought process going on. That tap is always flowing. It has no washer, so it cannot stop. But maximum number of thoughts are baseless. They are having no direction. So they are having no results. विचारों के बारे में अगर हम सोचेंगे तो बहुत सारे विचार either they are connected to the past or they are connected to future. जो चीजों के ऊपर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है वह भविष्यकालीन चीजें. I can only imagine. I can only have some guesswork about what can be my future. But can I bring the future today? No, not at all. Can I correct the changes, the things which I have done in the past? No. I have only one thing in hand, either to enjoy that or to repent on that. And maximum number of time we never enjoy. We only keep on repenting it. तो जो मैं बदल नहीं सकता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ, और जो मैं आज नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ. So my thought process is getting cut in the scissor, and the blades of that scissor are past and future. And what it cuts actually, it cuts my present. So never think or never allow your mind to have the thoughts which are not going to have any fruitful gain, any fruitful outcome. What is the present moment? Even if when I say present, that present word, before I utter it completely, it becomes past. So it's very interesting aspect that my thought process is very important. तो विचारों का मेरे मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा परिणाम होता है, बहुत ही ज्यादा असर होता है. और अगर मैं विचारों को सुधारता हूँ तो मेरे मानसिक स्वास्थ्य को मैं निश्चित रूप से सुधार सकता हूँ. विकार, because of bad thought process or wrong thought process, my entire metabolism of body and mind gets changed, and I become victim of so many fears, so many complexes, ahanganda, nyunaganda. Inferiority complex and superiority complex are the results of bad thoughts. And if you see the manovikar in today's time, they are mostly connected to either ahanganda or nyunaganda. Either they are connected with the superiority complex or inferiority complex. I am supreme. Nobody else is there. With this thought, I interact with the people. I am nothing. Anybody can come and tap me. I live with this world in this thought process. तो विकारों का जो परिणाम होता है वह मनोविकारों के हिसाब से it is primarily because of lot of wrong thought process. So गलत विचार मुझे कहाँ ले जाते हैं? मनोविकार के पास. और ये दोनों क्यों होते हैं? Because I am not in my विवेक state. मेरा विवेक हो चुका है, मेरा विवेक मेरे कंट्रोल में नहीं है.
और मैं अविवेकी बन चुका हूँ. Whenever I become विवेकी, I have got control on my thought process. I can eradicate my mental ailments. मनोविकार को मैं दूर कर सकता हूँ विवेक के सहारे. और अगर मनोविकार दूर हो जाएंगे तो मेरे विचारों की क्वालिटी भी बढ़ने वाली है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि विवेक. हमारा विवेक आजकल क्यों खो चुका है? विवेक इज नथिंग बट रैशनल इंटेलिजेंस. This concept has been very beautifully explained in Patanjali Yoga Darshan. It is because of avidya. Their concept is completely different. Patanjali has given the concept of this entire process of mind and body connected to the Purusha Prakriti concept. He is not at all involved in the normal people like us. We have to find out where we fit into that philosophy. पुरुष को लगता है कि मैं प्रकृति का एक भाग हूँ, यह अविद्या है. और ये अविद्या के कारण उसका विवेक हो चुका है. See the parallel thing. We are trying to understand a very important concept. As per Patanjali Yoga Darshan, विवेक हो चुका है. क्यों? क्योंकि he is under avidya state. Avidya leads to asmita, I-ness. That leads to likes and dislikes, raga dvesha, and that leads to abhinivesha. We are also having same state, but we are having in the lively world. That Purusha, the concept of Purusha is nowhere near us. But if we place in that Purusha state to us, we are also having a lot of illusions about ourselves. अविद्या हमारे बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे पूरे व्यवहार के बारे में हम बहुत गलत सोचते हैं. गलत सोचना as per today's crime is अविद्या for Purusha. मैं ही गलत नहीं सोचता हूँ, बाकी सब भी गलत सोचते हैं. That is I-ness, अस्मिता. मेरा सोचना कभी गलत हो ही नहीं सकता है. आई कैनॉट थिंक इन रॉन्ग वे. ये अस्मिता आज के जीवन की. और पुरुष की अस्मिता क्या है? कि आई एम पार्ट ऑफ प्रकृति. वंस ही डिसाइड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रकृति, ही इज हैविंग द नेक्स्ट पॉइंट इज राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. बिकॉज आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस. दिस वी डू एवरी मोमेंट. मुझे नमक ज्यादा पसंद नहीं है. Who is asking you this? But we keep on saying that. Raga Dvesha, as far as our life is concerned, it is materialistic likings and dislikings. And as far as Purusha Prakriti concept is concerned, his again I-ness is leading to Raga Dvesha and then Abhinivesha. That Purusha is feeling uncomfortable of living this world. So he is interested to remain in the Avidya state only. But the moment we are into that, we are having the fear of death. Everybody knows that the person who has entered this world is going to exit one day. Everybody is afraid of the death. Interestingly, the person is not problematic about the death. He is concerned with the reason of the death. हम लोग मृत्यु से नहीं डरते, हम लोग कारण से डरते. अभी आने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम रेडी टू लीव दिस वर्ल्ड. द मोमेंट यमराज आपके सामने खड़े रहेंगे तो अरे बाबा अभी क्यों आए हो? नहीं तो ऐसा ही बोला था. अभी तक मेरा ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है, उनका कुछ करियर मुझे देखना है, उनकी शादी देखनी है. अभी मेरे पास टाइम नहीं तेरे पास आने के लिए. सो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डेथ. सो राग द्वेष अभिनिवेश, ये सभी चीजें कंसेप्चुअली पतंजलि योग में अविद्या के कारण है और हमारे जीवन में अविवेक के कारण है. अविवेक इन अ नॉर्मल लाइफ पर्सन and avidya for purusha are at par, we can say. तो विवेक होने से विकार बढ़ते हैं और विकार बढ़ने से विचार बिगड़ते हैं. कभी कभी विचार बिगड़ने से विवेक हो जाता है और विवेक हो जाने से विकार बढ़ते हैं. और कभी कभी विकार इतने ज्यादा है कि हमारे विचार और विवेक दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य ये 3 घटकों के ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू ट्राई टू पैरेलली कंपेयर दिस 2 फैक्टर्स, आहार फॉर द माइंड, आहार फॉर द बॉडी इज माय नॉर्मल डाइट. विचार इज द डाइट ऑफ माइंड. तो आहार और विचार ये दोनों एक साथ है. ये 3 घटक हम लोगों ने जो देखे हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड है. आहार फॉर द बॉडी, प्रॉपर आहार, प्रॉपर हेल्थ on the body level, proper thought, proper mental health on the mind level,
Vihar, exercise. Proper exercise will make your body healthy. विकारों को दूर रखना, मनोविकारों को दूर रखना, complexes में ना रहना is nothing but removing the vikar from the mind. They go hand in hand. And rest, Vishranti for the body is nothing but Vivek. When Vivek enters the mind, mind doesn't think too much. And because of his not thinking, the vikar of the mind, they also go on. So these are the parallel things going on. So we can say in nutshell that my health is connected on the body level and connected to the mind level. And that the basic things are depending on three factors: शारीरिक स्वास्थ्य, आहार विहार विश्रांति, मानसिक स्वास्थ्य, विचार विकार और विवेक. सो ये प्रॉपर लेवल में है तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहेगा. लेकिन ये प्रॉपर लेवल में रहते नहीं है. अगर है भी तो लोग हमको कहते कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर हेल्थ. पैरामीटर्स हेल्थ के जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या कहेंगे, ये द मेजर कंसेप्ट. नाउ द थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड टू सच ए ग्रेट एक्सटेंट. द थिंग व्हिच वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी इन जनरल वाज कैटेगराइज्ड सेपरेटली. क्या होता था एक 35-30 साल पहले? द पर्सन हु वाज हैविंग हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, पीपल वर पॉइंटिंग ही ड्रिंक्स. गलत काम कर रहे हैं, ये दारू पीता है. Today the time had changed such a great level that they say he is not drinking, ये नहीं पीता है. So this is the problem. We are always afraid of recognizing that my health is good. We don't appreciate that. We don't agree with that. नहीं, मुझे कुछ तो हुआ ही है. अगर मुझे कुछ नहीं हुआ है तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ. ये हमारे माइंडसेट आज हो चुकी है because of lot of knowledge we gain from university which is not recognized by anybody but accepted by everybody. WhatsApp University. So primarily, even if we say that this concept of health is on two wheels, Sharirik or Manasik, a very beautiful presentation of our health has been given in Taittiriya Upanishad. And they have explained the health on a very nice manner, in a very proper way. They have given the concept of Panchakosh. 5 sheets of our existence. हमारे अस्तित्व के 5 स्तर उन्होंने बताए. पहला है अन्नमय कोश और ग्रॉस बॉडी. दूसरा है प्राणमय कोश और वाइटल बॉडी. तीसरा है मनोमय कोश और माइंड सेट और माइंड. चौथा है विज्ञानमय कोश और इंटेलेक्ट. और 5वां है हमारा आत्मा. सो ये 5 एग्जिस्टेंस के हमारे स्तर है. जैसा हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा कि आहार विहार विश्रांति या विचार विकार विवेक, ये सभी फैक्टर्स में ना दिखने वाले कौन से हैं? विचार विकार विवेक नहीं दिखने वाले हैं. दिखने वाले कौन से हैं? बॉडी लेवल. तो यहाँ भी वही है. अन्नमय कोश एंड प्राणमय कोश ओनली कैन बी सेंस्ड एंड कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन टेंजिबल मैनर. टेंजिबल का मतलब स्पर्श करने से या देखने से हम उसको समझ सकते हैं. So primarily we can touch the body, we can sense the breath, but we don't bother to sense the breath. How many times we observe the breath? Except by those who are into yogic world, they know what is breath. Others चल रही है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं. जब रुकेगी तब देखेंगे. This is the problem. So we are not at all bothered about pranamaya kosh, annamaya kosh and pranamaya kosh. These 2 sheets, these 2 kosha can be experienced, they can be seen, they can be sensed, they can be having some parameters of pleasure and pain. But what about mana, vijnanamay or anandamay? Manomay kosh. One more definition of amaya. Amaya means kosh, sheath. Amaya means covering. शरीर को कवर करने वाला अन्नमय कोश, सांस को कवर करने वाला प्राणमय कोश, मन को कवर करने वाला मनोमय कोश, बुद्धि को कवर करने वाला विज्ञानमय कोश और आत्मा को कवर करने वाला आनंदमय कोश. अमय मीन्स कवरिंग. So it covers my body, my breath, my mind, my intellect and my spirituality. If you try to see these concepts symbolically, it's a very interesting symbol. You know these 5.
Let us understand this is my Annamaya Kosh. Just for the sake of understanding, this is my Pranamaya Kosh. This is my Manomaya Kosh. This is my Vijnanamaya Kosh. And this is my Anandamaya Kosh. If you see, this Anandamaya Kosh is away from everybody. We are primarily this only, but we are engaged in this only. हम लोग अपने आप को शरीर से जोड़ के रखते हैं, सांस से जोड़ रखते हैं, मन से या बुद्धि से. But the moment we change our approach to the life, approach to our Panchakosh, when you have the bodily pleasure, Anandamaya Kosh and Annamaya Kosh can come together. When we have complete stability of breath and we are experiencing Prana Shakti, we can have association of Anandamaya Kosh and Pranamaya Kosh. When we are having complete mental peace, mind is not in pieces, but it is in peace. PIECES, pieces. टुकड़े टुकड़े हो गए मन के, लेकिन मन एक संध है, means mind is at peace. We get mental Anandamaya Kosh. Mind and Anandamaya Kosh come together. And then intellectual level, बौद्धिक स्तर पर कोई आनंद मिलता है तो आनंदमय कोश और बौद्धिक आनंद का एक साथ हो जाता है. लेकिन ये एक साथ जब आते हैं, it can reach any kosh, see, but it will not reach. You have to reach it and you have to gain it. If you are happy with the bodily pleasure, this is okay. If you are happy with body and breath, this is okay. If you are happy with body, breath and mind, this is with Ananda, this is Manomaya, this is okay. And we are okay with intellectual, it becomes a complete health. So equilibrium of all the seats of my existence, Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vijnanamaya Kosh, Anandamaya Kosh, ये सभी स्तरों के ऊपर अगर मैं संतुलित हूं, कोई भी असंतुलन किसी भी शीत में नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है, तो मेरा पूरा स्वास्थ्य अच्छा है. So this concept of Panchakosh is very important, and this concept of Panchakosh has been very nicely explained in Taittiriya Upanishad. So primarily, Annamaya Kosh is nourished on, again, Ahar, Vihar and Vishranti. Pranamaya Kosh, acceleration of respiration, reduction of respiration, it is connected with the Vishranti and Vikar. Chale vate jalam chittam nishane shalam bhave, very clearly said by yoga, Hatha Yoga. Manomaya Kosh, it is by mental activity, Viveka के साथ वो जुड़ा है, और बुद्धि, देने में Vijnanamaya Kosh, विज्ञान, ज्ञान and विज्ञान. विज्ञान का मतलब साइंस नहीं है, it's not विज्ञान. Science and Vijnan, we are always translate Vijnan as science. But Vishesha Jnana, what is that Vishesha Jnana? As far as Patanjali concept, I am not the Prakriti. This is Vishesha Jnana to that Purusha. He knows that he is not a part of Prakriti. What happens that time? Tada Drashtuhu Sarupaya Avasthanam. He goes into own state of existence. So Vijnan ka matlab hai knowing the self in a proper perspective, in a proper manner. We know us, definitely we know us, no doubt, but we know us from the different person's perspective. He says that I am so and so. She says that I am not so and so. So I am thinking that I am not so, I am so. How many times I know, I try to know that what I am actually. सबको दूसरों के बारे में सोचने की आदत पड़ गई. ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या नहीं कहेंगे, वो क्या नहीं कहेंगे. According to me, what I want, I will behave. This is called as a Viveka in Manasik Swasthya. This is called as a Buddhi or Vijnanamaya Kosh in Panchakosh concept. And when all these four states are at equilibrium, how we can expect that Adhyatma can remain away from us? How spirituality can be away from us? Not at all. So when Anandamaya Kosh is a complete state of bliss, what is that state of bliss? Again, understand this concept in a different manner again. The Ananda is not only restricted to body. It is not only restricted to breath. It is not only restricted to mind. It is not restricted to buddhi. But it is restricted to every four factors
working together. They all are together. They are not separate. They are not tede-mede. So my Ananda is not connected only to the body, only to the breath, only to the mind, only to the intellect, but it is connected to everything. And when this everything comes together, it becomes a completely healthy person. So the concept of health as per Taittiriya Upanishad is Panchakoshatmak health. Now why this concept does not come into reality? What makes exactly to disturb these five sheets? क्या होता है? क्या गड़बड़ होता है? Why imbalance? Structurally I am perfect. Functionally also I am quite okay. सांस तो आती जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मन मेरा वैसा स्थिर है, लेकिन कभी कभी बिगड़ता है. बुद्धि के बारे में सोचो ही मत. इट्स सुपर. ये सभी इल्यूजन्स को पहले निकाल दो. So primarily when we think of the imbalance in these five koshas, and imbalance in the physical and mental health, the main culprit we can say is Manomaya dosh. I will not call it a culprit, but it's a loose link we can say. There is a weak link in every linking process. कमजोर कड़ी कौन सी है? मन है. Why so? Because it is wayward. चंचल है मन. It is not stable. क्या करूं मैं, वो कंट्रोल ही नहीं होता है. Who allows you to not control it? Who has stopped you from controlling it? It is very simple to say. Even Arjun said, it is not simple. मन को कंट्रोल करना यानी हवा को पकड़ने जैसा महान दुष्कर काम है. लेकिन उसके बारे में भगवान ने क्या कहा? अभ्यास एंड वैराग्य. डिटैचमेंट विथ कमिटमेंट. Contradictory words, no? Commitment is also one thing, and you are saying at the second side, we detachment. How can I detach when I am committed? And how can I get committed when I am detached? Don't take the literally or dictionary meaning. Involve yourself everywhere, but the moment you are done with it, go away. वैराग्य का मतलब काम छोड़ना नहीं है. कर्म संन्यास भी लेते हैं हम लोग, तो भी जीवन का जीने का कर्म तो करना ही पड़ेगा मुझे. So it's not the concept. Commitment is there. I am sure whenever I am committed to anything, I am using all my five sheets in combined way. The moment I complete my work, I detach myself from that work. I. When you detach that I from that, it becomes vairagya. वैराग्य का मतलब भगवी वस्त्र पहनना और संसार को छोड़ के भाग जाना नहीं है. वैराग्य का मतलब है वही रहते हुए वही चीजों से अलग रहना. आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर. आई कैन गिव यू वन नाइस एग्जांपल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. वैराग्य किसके पास है मालूम है? मक्खन के पास है वैराग्य. बटर. जब हम बटर मिल्क करते हैं ना, दही लगाते हैं, उसका बटर मिल्क करवाते हैं, तो बटर मिल्क को करने के बाद हम लोग उसमें से मक्खन निकालते हैं. ए ब्यूटीफुल लोफ ऑफ वेरी स्लाइसी और वी कैन से वेरी सॉफ्ट मक्खन. यू हैंडल इट विथ केयर एंड यू पुट इट इन द बाउल ऑफ वाटर. अभ्यास हो गया. मक्खन निकालना अभ्यास था. मक्खन मेरे हाथ को चिपका है क्या? नहीं चिपका है. पूरा मक्खन मैंने निकाल दिया, तो हाथ का वैराग्य हो गया. जो ऑब्जेक्ट है मक्खन का, जिसको मैंने पानी में डाला, so that water is accommodating that makhan, and because it is accommodating, it is floating. Water feels that makhan is my part. Again, complex of Purusha Prakriti concept. Makhan doesn't feel that I am part of the water. मक्खन ने अभ्यास करके अपने आप को निकाल लिया बटर मिल्क से. उसका वैराग्य अभी है. How it is enjoying the vairagya? He is with the water but not a part of the water. The moment you lift that makhan up, water separate, makhan separate. Vairagya is to be experienced in that way. But unfortunately, we don't do that. We are always there to take the credit of what we have done and credit of not what we have done. हमारे पास वैराग्य की भावना ही नहीं. So abhyas and vairagya, these are the two factors which have been told very categorically in so many scriptures of yoga. So why this asantulan? Imbalance happens in the manomaya. How it happens?
When mind is dominated by intellect, it doesn't get engaged to the karma vipak. अगर बुद्धि के स्तर पर मन हमारा काम कर रहा है तो विचारों की स्थिरता अपने आप आ जाती है, और स्थिर विचार से की हुई कोई भी चीज जो होती है वो हम लोग कर्म फल के लिए नहीं करते. आई एम नॉट saying it as a thumb rule, but you only analyze that concept. Whenever your mind is with completely stable and focused thoughts, and based on that thoughts, when you complete any work, you don't get entangled into that work. You don't go into nostalgia. क्या solid काम किया था मैंने, ऐसा मैंने किया था, लोग कहते हैं क्या solid काम किया है, but I am not getting attached with that. This is the state of vairagya. So when our mind is having a complete control of the intellect, विज्ञानमय कोश के प्रभाव में जो भी काम मैं करता हूँ, जो भी विचार मेरे है, वो विवेकी विचार है, अविवेकी नहीं. तो विवेकी विचारों का ना देर इज प्लस ना देर इज माइनस, बाकी शून्य, nothing remains. So I go for next one, provided it is based on viveka and buddhi. But is it the fact of the life? No. In reality, maximum thoughts are overpowered by emotions. भावनाओं का बहुत बड़ा परिणाम हमारे विचार प्रणाली पर, विचार पद्धति पर होता है. And because of that, we always feel that emotions are the main culprit, which either distract my mind from the proper thoughts, or it doesn't allow my thoughts to go on the proper track. So because of that all, my mind gets disturbed. Emotions are overpowering. Emotions are suppressed either, or they are overexpressed. So what is the concept of bhavana and vichar? Vichar dominated by bhavana, under complete control of emotions, they start hammering my thought process. My thought process gets acceleration. It happens accelerated way. Thoughts happen, they flow like a floodgate of the dam. When you open the floodgate, water flows directionless, and it destroys everything which comes in its way. Like that, my thought process starts. A very interesting thing happens in the body, how this particular concept works, how my health gets distorted, why my panchakoshas cannot come in balance, that we are trying to understand now. Anatomical impact of the thought process. And that thought process is not under control when you are under stress. Simple. And I'm not going to talk on the stress management. Primarily, uncontrolled thoughts start giving electrical impulses in my body. From heart to brain, traffic starts. That traffic handling has got one havaldar, two havaldars. But when the traffic is too much, these two havaldars helpless. They don't intend to control the traffic? No, they are not able to control the traffic. So my electrical impulses get transformed to chemical impulses. This particular concept of analyzing the emotions, acting on the emotions, and leading to a thoughtful process is done by the organ in the body, hypothalamus. Thalamus is the relay center of emotions. Hypothalamus is the analyzer of the emotions. The organ, interestingly, analyzing the inorganic things. Emotions, no organic pattern. There are so many emotions we have in mind, we have in ourselves, our existence. But they are all non-physical in nature. They have no structure, they have no pattern. But that they are analyzed by hypothalamus. Hypothalamus also has got a designated pattern, designated manner of handling the emotions. He is able to, or it is able to understand and analyze the emotions which are up to a particular level. Threshold. If the emotions are above the threshold, overpowering emotions, emotional mess, hypothalamus becomes helpless. It is not able to understand what to do. When you don't know what to do, what you do? Passing the buck. भेज दो दूसरे के पास. कैसा होता है? दो टेंडेंसी होती है.
मराठीमध्ये ते छान सांगता येईल तुम्हाला. बघून सांगतो आणि सांगून बघतो. बघून सांगतो म्हणजे काय, वॉट एवर पॉसिबल आई विल ट्राई टू. जो मेरे हाथ में नहीं है उनको मैं बता के देखता हूँ, वो करेंगे तो ठीक है. Same thing happens. Hypothalamus passes that particular pressure on the pituitary. Here the electrical impulses stop and chemical impulses erupt. Chemical impulses is very nicely explained by Mundabai MBBS. Chemical locha. What is chemical locha? Imbalance of chemicals in the body. Who controls them? Pituitary gland. Master gland. Every thought process, the thoughts are common. For example, examination. Thought related to examination. Forum is common. Impact, everybody has got different impact. Because everybody, hypothalamus is there, pituitary is there. The reaction of these two differs by every person. Some people get fever, some people get extra urination, some people are lose motion, some people lose their appetite, some people don't have sleep. Organ of the person gets changed. So pituitary is not doing something wrong. It goes directionless. And it gives some wrong instructions to the other secreting glands. And the gland secretion either in excessive or in no excessive manner. That is what is chemical locha. Imbalance in the chemical secretion or hormone secretion of the glands. So this concept of hypothalamus, pituitary and organ, HPO, is the main concept or main axis of my health or ill health. If my hypothalamus is operating perfectly, my axis is going in a proper way. Because it is not disturbing my pituitary. My pituitary is not disturbing my organ. So that my health line goes very nicely in a particular direction. It can be horizontal, it can be vertical, no problem. But the moment my hypothalamus loses control, my axis gets up, goes down like this, curving, up and down, spurts. So, hypothalamus, pituitary and organ, these are the three major things which are primarily responsible for disturbance of my monomere cosh. And monomere cosh is disturbed because of the wrong thought process, not based on intellect, but dominated by emotions. The moment this UT, presently the era is of UT, nobody is having independent capability of ruling anything. तो दो अलग अलग शक्तियां एक साथ आ जाती है. जो डाइवर्जेंट है रे, थॉट पिलर प्रोसेस कंप्लीटली डिफरेंट है, फिर भी एक साथ काम करते हैं. क्यों? वैसे ही युति हो जाती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी की. एंड हु इज द विक्टिम? ऑर्गन. हु आर द विक्टिम्स ऑफ पॉलिटिशियंस? नॉर्मल पीपल. Hypothalamus, pituitary and organ, this axis gets formed and it gets firm. It not only gets formed, it gets firm day by day. And whatever happens in the organ level, we call it as a disorder or disease. And that is a sign of a swasthya. No swasthya at all. And because of that, on this concept, I have to give this credit to Dr. Ulkanathu, who noted about that. She had presented her project during her diploma course, and I came across the assessment of that project. I found that concept very interesting. I showed it to Annaji. And one more thing which happened, otherwise it would have been only one dissertation gone into files. Somebody has to give thought. First thought was analyzing this, which was done at my level. I thought that it must be brought on the proper forum. And who was the proper forum for us? Anna. When it was shown to Anna, he gave a thought to it, and the entire dimension of this HPO was changed. See the way in which this concept is getting solved now. This vicious circle of monomere cosh, it impacts my pranamaya cosh, it impacts my annamaya cosh. Increased thought process, increased respiration, and increased metabolism or decreased metabolism. It can impact my body in any way. So hypothalamus is nothing but wrong thought process. Pituitary, nothing but imbalance of prana. And organ, annamaya cosh getting destroyed. We have seen this particular statement coming from the doctors so many times. The patient is very bad on the bed
but very fine on the papers. What does it mean? No symptoms. Reports तो सब clear है, लेकिन ये अभी कभी मरेगा पता नहीं. This is the problem of HPO. Anna gave a thought to it, and he have one more axis above that. He cut the hypothalamus pituitary organ axis. ये एक्सिस बहुत बेकार है. ये जो नेक्सस बना हुआ है इनका, ये तोड़ना चाहिए. So what is said? SEM. What is that S? Spirituality. E, emotions and mind. Who is the point of disturbance for hypothalamus? Mind. Above that, HPO, there is spirituality, then emotions and mind. Mind correction has to start. The moment you start correcting your mind, it will correct your emotions. The moment you correct your emotions and mind, which are the main reasons for stimulus of this hypothalamus pituitary organ axis, it will stop at that particular point and it will lead you to the spirituality. Exactly the same process happens in Tamo, Rajo and Sattva. Whenever we are having too much energetic, too much actions, Rajogun dominant, nothing happens, but still it requires everything, Tamogun. The moment you eradicate both these two, and Sattva Gun enters, Sattva Gun is a sign of light. So, HPO-ACM axis was developed by Annaji. And based on that, it is now necessary to understand how to correct this. सब कुछ accepted है. Problem है, agreed. Problem मेरे control में नहीं है, agreed. I am not responsible for the problem, agreed. Still, how to correct it, very important. Now, what happens in this process we have seen? Anatomically, the impact of stress or thought process, it impacts my pituitary gland. That pituitary gives misdirection, or it doesn't secrete proper manner of hormones, and that disturbs my body. But can I directly go with the body? Can I directly go with the mind? No. How yoga works? We will try to understand this concept of correcting this, but in the next 10 minutes. How to gain the ill health, or how to gain the health by avoiding the ill health. इल हेल्थ को दूर करके हेल्थ को कैसे पाना है, या अस्वास्थ्य को दूर करके स्वास्थ्य को कैसे पाना है. ये जो है उसको बाजू में रखना है. Is it possible to uproot it and throw it away? No. When you uproot the deeply rooted things along with the roots, it will bring a lot of soil along with it. How to do with that soil is the main problem. So nothing is possible like that. You cannot uproot. You can start changing. What is the first change? Don't give proper nutrition to that roots. What is that proper root of my major problem? Mind. Does it mean that don't allow the thoughts to come? No. Don't allow the thoughts which are disturbing me to come in the mind. I know for sure what is disturbing thought and what is proper thought. But still, why I allow that disturbing thought to come into my mind? Because that is convenient for me. Our normal mindset is like this. If you are weak, people will pay attention to you. If you are strong, they may not take your attention. But even the sword and the shield, two mindsets. Whenever you are given both, you will use shield only, weakness. But when I am given sword, why I want shield? No way. My sword is sufficient enough to tell the people that now be aware. My strength is my strength. And I will use it as per my convenience, as per my usage. Instead of that, what I do? I use my weakness very strongly and draw attention from the people. I draw energy from the people and I start making mess of everything. So, Manomaya Kosh, how to correct it? In fact, how yoga is impacting my overall improvement in the Panchakoshatmak health. 5 sheets of my existence: Annamaya Kosh, Pranamaya Kosh, Manomaya Kosh, Vijnanamaya Kosh, Anandamaya Kosh. We have seen the concept that Manomaya Kosh has been disturbed. It impacts my Pranamaya Kosh and it impacts my Annamaya Kosh. So forget about going towards Vijnanamaya Kosh. विवेक पूरी तरह से खो चुका है.
ये तीनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. Sometimes it happens that there is some body problem. Because of that, my mind gets disturbed. Agree. Somatopsychic disorders. Because of the body problem, I get some disturbance in the mind. But body problem don't occur on its own. They are having the background of mind. So कहीं ना कहीं तो मन में कोश का प्रॉब्लम है ही. बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोगों को सडनली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों होती है? पीपल ट्रीट दैट पर्सन एज ए वेरी आइडियल वन. कोई उसको बुरी आदत नहीं है, कुछ भी लेता नहीं है, कुछ भी पीता नहीं है, कुछ भी खाता नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम क्यों हो गई? क्योंकि ये सभी चीजें दिखाते समय मैं कितना रेगुलर हूँ. ही इज ट्राइंग टू सप्रेस समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल टू एग्जिबिट इन द वर्ल्ड. कोई ऐसा दुख है जो हमारे मन को दबा के बैठा है. ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट sorrow, anger, whatever to others because people treat him as a different perspective, and he is trying to enrich that perspective of the others by not expressing the emotions proper way. I have seen so many examples like this. Prima facie everything is perfect. Suddenly that person gets cancer, and that too of last stage. It is nothing but suppressed emotions beyond doubt. So either express or don't allow the emotions to touch you. Second point is not that possible. I know. So primarily, whenever there is a disturbance in the Manomaya Kosh, it is because of the wrong thought process, wrong way of living, wrong way of thinking. It impacts my Pranamaya Kosh, either accelerated breathing or very shallow or haphazard breathing. It doesn't give a proper Pranashakti to my body. And when I don't get proper Pranashakti, either by air, water and food, my body gets ajirnatva, ujirnatva, ya atijirnatva. So either of that happens in my body. And my Annamaya Kosh gets distorted, it gets some disorder or disease. These are called as a psychosomatic disorder. मनोकायिक विकार. मन और काया. काया means body. कारण मन में है, परिणाम शरीर पे है. हमारे गुरुजी अन्ना जी का एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है. उन्होंने बहुत थॉट प्रोसेस करने के बाद ये बॉटम लाइन निकाली थी. उन्होंने क्या कहा था? आज के बहुत से रोग जिनका केंद्र बिंदु मन है और क्रीड़ा क्षेत्र शरीर. द पॉइंट ऑफ रीजन इज इन द माइंड एंड द प्लेइंग फील्ड इज बॉडी. हाउ टू कंट्रोल दैट? वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऑफ अष्टांग योग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन रिमेनिंग टाइम. अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. How to use these 8 limbs? The impact of 8 limbs by Patanjali, what he has said: Ashuddhi Kshaya, Jnanadipti, Viveka Khyati. Ashuddhi Kshaya, Annamaya Kosh correction. Jnanadipti, Manomaya Vijnanamaya getting together. And Viveka Khyati, Anandamaya Kosh coming into picture. Let us understand this concept now. If you follow Ashtanga Yoga, if you practice Ashtanga Yoga, what will be the reason? What will be the impact of that? 3 things he has given very clearly. Ashuddhi Kshaya, eradication of all impurities. What are the impurities? Antaraya, Vikshepa, Sabhuva. This is the, from there what starts for Purusha? Asmita goes, Abhinivesha goes away. No problem about death and life. So what happens? Attached raga dvesha to that life, they go. Who are these 3 are connected to what? Asmita. Abhinivesha, raga dvesha, when they are going away, they take away along with that Asmita. And when all these 4 go away, what remains? Avidya. Avidya goes away for Patanjali Yoga Darshan. Is nothing but Viveka Khyati. He has got a discrimination power. He understands I am not the Prakriti or part of the Prakriti. The moment he understands that, all these 5 Vikshep, they go away. Obstacles in the practices, Antaraya, they go away. Sahabhuva of that Vikshepa, they are associates. What they come to picture by way of Shwasa Prashwasa, Angame Jetu,
So that is the major problem. So these particular things, dukha dharma se anga mein je to shwasa prashwasa. Dukha dharma se mental ailments. श्वास प्रश्वास अंग में je to body. So मनोमय कोश बिगड़ा हुआ है दुख दौर्मनस्य. That impacts my pranamaya kosh, and because of that, shwasa prashwasa, pranamaya kosh getting distorted, and that is a trembling of muscles. This is very nicely explained by Patanjali. How to correct it? Ashtanga Yoga, Yama Niyama, the rules of social life and individual life. Very interesting concept. Patanjali is not telling you to be away from the society at all. You have to be part of society. You remain the makhan in the water unless somebody takes you away. You are a part of society. So समाज में रहते हुए क्या क्या करना है, ये सभी चीजें जब हम करना शुरू करते हैं, पतंजलि ने तो वार्निंग दिया है. He has told you to do it as a great vow. महाव्रत, not as per convenience. आज का दिन बड़ा शुभ है, मैं एक दो यम नियमों का पालन करूंगा. No, it is to be done on every moment. यम नियम, यम are the social life. अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य. If you start following them, what is Pratipaksha Bhavana? Beautiful way of explaining how to control these things, how to understand this concept, how to implement that Yamaniyam into life. Pratipaksha Bhavana. अरे सच बोलना बहुत डिफिकल्ट है आज के जमाने में. Agreed. If I start saying truth, so many people will come into trouble. Agreed. Perfectly well. But I am not telling you to say truth. I am telling you to say, don't say lie. Very interesting aspect. झूठ मत बोलो. प्रतिपक्ष भावना क्या होती है? सच बोलना अवघड़ है. Agreed. झूठ बोलना आसान, झूठ ना बोलना आसान है. सोचना पड़ेगा. You come to thought process. The moment you are told not to say lie, हाँ इसके बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि मुझे सच मालूम ही नहीं है. I don't know what is truth. That's why I don't say. And I take the pretext. अगर मैं सच बोलूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. Agreed. You know for sure. Everybody of us knows for sure what is not truth. What is lie we know for sure. So don't you say that. So प्रतिपक्ष भावना is like that. Look it from different perspective. पक्ष ये है, प्रतिपक्ष means opposite. इसको हम कैसे देख सकते हैं दूसरी एंगल से, उसके बारे में सोचना है. तो यम नियमों का अभ्यास करना हम जब शुरू करते हैं, what happens immediately? We start getting the relief from the pressure on the mind of unwarranted thoughts. हमारे मन का मैग्नेटिक दौर जो है ना, तो पूरा नकारात्मक विचारों से भरा होता है. आपके घर का मैग्नेटिक दौर भी होता है, उसके ऊपर चढ़ के देखो एक बार क्या क्या रखा है उसमें. It's nothing but recycle bin of the computer. What is not required, you put in that bin. No? So keep that particular unwarranted thoughts presently for the recycle bin. निकाल दो उनको. झूठ मत बोलो. अहिंसा. Don't be instrumental for any hinsa indirectly or directly. You need not do it. You should not be instrument also. अस्तेय, जो मेरा नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, मेरा क्या है वही मुझे मालूम नहीं. I don't know what I have and what I don't have. So I am always confused. So I keep on collecting the thing, moreism, dil mange more. Control that tendency. The moment you start controlling that tendency, अस्तेय की भावना निकल जाएगी. अपरिग्रह, unwarranted collection of things. It's not only materialistic things, unwarranted collection of thoughts. Imagining thought of mind has to be clean. Aparigraha. Brahmacharya. Brahmacharya is not necessarily connected to a life, married life or unmarried life. No way. Brahma means अंतिम सत्य. मुझे तो पहला सत्य मालूम तो अंतिम सत्य क्या होगा? Forget that all things. अहम ब्रह्मास्मि. I am the universe. ये सोच भी हमारे जीवन को नया आयाम दे सकती है. It gives you new dimension at all. And that's why you have to correct your mindset with the help of Yamaniyam practices. The moment you start doing that, the pressure on the mind starts getting reduced. Your mind gets composed. It gets more and more balanced.
The moment mind gets balanced, imbalanced state starts getting corrected. So you come at the equilibrium of mind and thought process. My thoughts are not primarily dominated by emotions now. They are having the control of the buddhi. What buddhi works, whether it is right or wrong, it tells you that. Emotions don't tell you that. Emotions always say that right is wrong and wrong is right. बुद्धि के स्तर पर अगर immediately मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो I am coming to the state of equilibrium, which is a main reason for my all अस्वास्थ्य, distorted mindset. बिगड़ा हुआ मनोमय को सुधारने के लिए इनिशियली ओनली यम नियमों का अभ्यास सफिशिएंट. उसके बाद क्रिया, शुद्धि क्रिया और आसनों से मेरा फंक्शनल लेवल ऑफ द बॉडी, कार्यात्मक दोष जो है उनको मैं निश्चित रूप से कम कर सकता हूँ. त्रिदोषों को मैं साम्यावस्था में ला सकता हूँ. समदोष समाग्निश्च. मैं both this all these parameters come into normal. So asana and kriya, they can correct my body level to some extent, and that becomes a practice of my body. So my body getting impacted by every now and then by unwarranted and warranted thoughts stops that activity. So my body is not getting impacted by the unwarranted thoughts as frequently as it was previously doing. Because of that, what happens? I start getting the feeling that my all functions are perfectly working. Imbalances in the systems gets balanced. It is directly impacting my pranamaya kosh. My pancha prana, apan, vyan, udan, saman, they are connected with my 5 functional systems. And when my internal metabolism improves because of asana and kriya, of course, consistent practice of asana and kriya, yathashakti vidivat, as per capacity, but within the parameters. If I do that, my functional system gets stabilized. Electrical impulses, chemical impulses, the frequency, intensity, and impact starts getting reduced. And I start getting my body level correct. It includes the ahar, vihar, vishranti. No vihar is better than asana. I can vouch that. So my body level, annamaya kosh starts getting corrected along with my pranamaya kosh. Internal functioning of my systems getting in tandem is nothing but bringing all my 5 prans in a proper state of equilibrium. The practices of pranayam is not only for body. Initially, it can be for body, no doubt. Subsequently, it is always for the mind control. श्वसन नियंत्रण क्यों करना है? मनोनियंत्रण के लिए ही करना है. और मनोनियंत्रण कैसे करवाना है? श्वसन नियंत्रण से ही करवाना है. So the moment I start pranayam practices, maybe some sort of advanced pranayams, I try to control my prana apan movement. That movement goes in opposite direction, which is the core of Hatha Yoga. Apana goes upward, prana goes downward. I am not concerned with the spirituality of Kundalini, no way. मेरा जो भी चल रहा है वो अच्छा चलने दो बस. This particular concept of pranayam corrects your body and mind at a time. The impact of body and mind, they are distorted, they get together. My prana works in tandem, my systems work in tandem. How my annamaya kosh can get distorted? No way. Out of question. So once that gets corrected, I start going to the point of entering the area of Vijnanamaya kosh. Vijnanamaya kosh में क्या करवाना है? विशेष ज्ञान किसका पाना है? अंदर का पाना है. I want to get the real knowledge of not outside world. Outside world I can see, I can experience, I can have a lot of notions and emotions about that. I want to get rid of that. I want to read my inner world. And to reach my inner world, I have to do pratyahar, prati-ahar. Here the dimensions of my health completely get changed. We are trying to understand the concept of dynamics of health. So the dynamics, which was dysfunctional so far, it becomes functional. The moment it becomes functional, I control my body and breath and mind to some extent. To further tone up my mind, the only tool is my pratyahar. Pratyahar is a needle. It is a needle. It can give anything. When needle goes into particular object, is her mouth
towards the world or away from the world? How to understand the pratyahar? When you are going to some temple, you are going from a particular road. There are so many attractions both sides of the road. Don't look at them. My objective is to go to temple. When I have the focused attention to reaching the temple, all the luring things in my both sides of the road, they don't tamper my mind. They don't make my mind luring. Dil mange more kam hota hai. When dil mange more kam hota hai, तो what is mange dil? तो सामने आता है. क्या मांगता है दिल? मंदिर पहुंचो. मंदिर पहुंचने के बाद I go into dharana state. Pratyahar makes me to reach the temple. What is the temple? The temple is of health. The problems coming in my health temple journey, body, breath and mind, they are stabilized. The moment I go to the arena of the temple, I'm not bothered who is sitting as a beggar, who is sitting as a flower merchant. No, my attention is on the God. That is my samadhi avastha. To reach that, I go into that pendal. How much time should I linger in that pendal? Once you are in the pratyahar state, you have no comeback. You are not at all going to have more time spending in that pendal. You go into that temple and the gabhara, or the core of that particular area. What is that core? Dharana. The moment you stand in front of that core, nothing is in your way. You are only focused on a particular point and you can see the idol. And that is my dhyana state. कहाँ ध्यान करवाना है? पदों का करना है, मुखों का करना है, हाथों का करना है, या कुछ भी नहीं करना है. That choice is at the core of that गाभाऱ्याच्या मी मुखाशी जाऊन उभा राहिलो की मला दुसरं काही दिसत नाही. So this is the way in which antaranga sadhana should be working. You should work on that antaranga sadhana. And once you are into that state, so many things which are otherwise disturbing at all the time to you, they don't become disturbing. They become your friend. They become supporting. They don't distract you. क्षिप्त, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र. एकाग्र निरुद्ध. ये 4 निरुद्ध स्टेज तक जाने के लिए अष्टांग योग के पहले 5 स्टेजेस उपयोग है. और बाकी चित्त की जो भूमिका है एकाग्र निरुद्ध, not detached, not attached, committed but detached, committed with detachment or detached with commitment. ये सभी चीजें जहां होती है वहां हमें कौन सा देव मिलता है? Which God we get? स्वास्थ्य जीवन का. You get the healthy body, healthy mind, and the God which is very much within you. You just explore it in a different way, and you get a swasthapurna life. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Thank you very much. हरि ओम. भास्करजींनी फार सुंदर विश्लेषण केलं. डायनॅमिक्स ऑफ हेल्थ. यमराजाची भीती करू नका. आला तरी त्याला काय, तोपर्यंत जे आपलं आयुष्य आहे ते चांगलं गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी त्यांनी फार चांगला मार्ग सांगितला. विस्तृत विश्लेषण होतं. फार छान वाटलं मला. कोणाला काही प्रश्न असतील तर त्यांनी विचारावे. मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकायला सांगितले आहेत. कुठला एखादा दुसरा प्रश्न येईपर्यंत मी एक प्रश्न विचारतो भास्करजींना. एवढं सगळं तुम्ही 1.5 तास विश्लेषण केलं, म्हणजे सगळं करायचं आम्ही केव्हा कसं, त्याचं थोडस आम्हाला हे सगळं छान वाटतं ऐकायला. हो बरोबर आहे. हा ओके. एनिवे कसं आहे माहिती का, ही प्रोसेस आहे. ही सगळी जी आपण इन्स्ट्रुमेंट बघितली, ही सगळी साधनं जी बघितली, ही सगळी एका वेळी आपल्याला वापरता येणार नाही. वी हॅव टू यूज देम ॲज पर द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्स्टन्स. तर एखाद्या गोष्टीची तीव्रता कशी आहे, किती आहे, त्यावेळेला जर समजा तुम्हाला उपचाराची गरज आहे, यू हॅव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट. यू कॅनॉट सबस्टिट्यूट ट्रीटमेंट विथ द योग.
but at least enter the field of yoga to some extent by doing some physical exercises, by doing some asana, even Sukshma Vyayam. I tell you, you need not go for very fancy asanas like Mayurasana, Shirshasana. They are not the only asanas in the world which can make you to be a yogi or recognized yogi. No way. Even in Sukshma Vyayam, a very beautiful concept. Sukshma means micro level. The moment you start doing gross movements, this grossness is connected somewhere to micro level in the mind. And that microness of the mind goes to nano level. When you work on the body, it doesn't only impacts the body, it also works on the cells. But we cannot directly go to the cells. एक तुम्हाला उदाहरण देतो, झाडाच्या मुळाशी दोन मार्गाने पोचता येतं. तुम्हाला झाडाच्या मुळाशी पोहोचायचं असेल 2 मार्गाने पोचता येतं. कुदळ बनवून पोचता येतं किंवा पाणी म्हणून पोचता येतं. कुदळ म्हणून पोचलं तर सगळं डिस्टर्ब होणार आहे. पण पाणी म्हणून पोचला तर इट कॅन नरिश एव्हरीथिंग. सो स्टार्ट डुईंग स्मॉल थिंग्स अँड दिस स्मॉल थिंग विल लीड यू टू समथिंग विच इज व्हेरी व्हेरी ग्रेट. आणि ही साधना जी आहे ही प्रत्येकाने आपल्या वेळेच्या उपलब्धीनुसार करायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो, वेळ नाही ही गोष्ट खोटी आहे. अण्णांचंच वाक्य मला रिपीट करावंसं वाटतं. अण्णा अगदी ठासून सांगायचे, आणि तुम्हाला सांगतो, वेळ नाही ही गोष्ट मला पटणारी नाही. वेळ आणि कर्ज काढावं लागतं आणि दोन्ही फेडावं पण लागतं, हे पण तेवढंच महत्वाचं आहे. हे ऍडिशन मी केलं कारण मी बँकिंग असल्यामुळे कर्ज काढलं की फेडावं लागतं, ते एनपीए होतं अकाउंट. सो प्रायमरीली तुम्हाला वेळ काढावा लागेल. फालतू गोष्टी करायला आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे. 1 तास तुम्ही स्वतःने काढू शकत नसलात ना तर देर इज नो सेन्स टू युअर लाईफ. एनिवे युअर मीन्स एनीबडीज लाईफ. कारण वी हॅव गॉट सो मच टाइम टू स्पेंड. पास करायला भरपूर टाइम आहे पण वापरायला टाइम नाही आहे, ही गोष्ट खोटी. डोंट गो फॉर 1 hour, ऍटलीस्ट डू फॉर 10 minutes. तुम्हाला सांगतो, सूक्ष्म व्यायाम ऑल्सो वर्क्स व्हेरी इफेक्टिव्हली ऑन द माइंड अँड बॉडी. नो डाऊट अबाउट दॅट. सार असं आपल्याला घ्यायला हरकत नाही की काहीतरी आपण सुरुवात केली पाहिजे. आणि एक्झॅक्टली. जेव्हा तुम्ही सुरुवात कराल, थोडस जरी केलं आणि त्याचा फायदा तुमच्या लक्षात आल्यावर आपोआप गोडी निर्माण होईल आणि तुम्ही पुढे त्याचा अभ्यास कराल. तर ही गोडी निर्माण करण्यासाठी मस्करजींनी आपल्याला पूर्ण विस्तृत विश्लेषण केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि सर्व आपल्या वाचकांना किंवा जे आता जे ऐकताय, श्रवण करतायत, त्यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की आम्ही 3 तारखेला दिल्लीला IYAच्या सर्व भारतातल्या ब्रँचेसची एक योगा कॉन्क्लेव्ह ठेवली होती त्यांनी. त्याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींवरती विस्तृत चर्चा झाली. तर तिथे पुन्हा एकदा अशी चर्चा झाली की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये म्हणजे प्रत्येकाने आपापल्या राज्यामध्ये योगाचे कार्यक्रम करावेत आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योग पोहोचवावा. आता बऱ्यापैकी सगळीकडे योगाबद्दल जागृती झालेली आहे, लोक करू पण लागलेले आहेत. तरी पण अजून बराच असा क्लास आहे की जो अजूनही त्याच्यामध्ये प्रवृत्त झाला नाही. तर त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी किंवा त्यांना योगाच्या मध्ये गोडी निर्माण करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या स्तरावरती कार्य करावं लागणार आहे. तर आता आम्ही सध्या गेले 13-14 महिने झाले आम्ही हा कार्यक्रम दर महिन्याला करतो. तर मी दरवेळेस अनाऊन्स करतो तसं आज पण पुन्हा सांगतोय. मला मध्ये 2 संस्थांनी विचारणा केली की आम्हाला असा एक कार्यक्रम करायचा तर आम्ही करावा का. ते म्हणलं डेफिनेटली करावा. आता ज्या काही संस्था आमच्याशी संलग्न झाल्यात, म्हणून पुन्हा एकदा विनंती की ज्या काही महाराष्ट्रामध्ये संस्था आहेत किंवा जे साधक आहेत त्यांनी IYAची मेंबरशिप घ्यावी. म्हणजे जे काय आपण ऍक्टिव्हिटीज करतोय त्याची तुम्हाला आमच्या बुलेटिन तर्फे माहिती मिळेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर तुमच्याकडे काही प्रोग्राम अरेंज करायचा असेल, 1 दिवसाचा वेबिनार, हाफ दिवसाचा वेबिनार, इट मे बी ऑनलाईन, इट मे बी फिजिकल, तर दोन्ही गोष्टीसाठी जर तुम्हाला काही मदत पाहिजे असेल, माहिती पाहिजे असेल किंवा एक्सपर्ट स्पीकर पाहिजे असेल तर ते आपण प्रोव्हाइड करूया. आम्ही दिल्लीला जेव्हा झालं कॉन्क्लेव्ह त्याच्यामध्ये आम्ही अजून एक मी इच्छा प्रगट केली की आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आम्ही करू, पण आम्हाला महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या पण ह्याच्यामधले योगातले एक्सपर्ट आहेत त्यांना पण आम्हाला जर बोलवायची इच्छा असेल तर त्यांची आम्हाला नावं आणि पत्ते द्यावे, फोन नंबर द्यावे. म्हणजे जर कोणाला जर त्यांना बोलवायची इच्छा असेल तर आपण त्यांना पण बोलवू शकतो. तर आता महिन्यातून एखादा दिवस फिजिकल प्रोग्राम, आता कोरोना संपलेला आहे त्याच्यामुळे त्यांनी करायला हरकत नाही. त्यांना जी काय टेक्निकल नॉलेज लागेल, एक्सपर्ट लागेल ते आम्ही त्यांना देऊ. तसंच त्या ज्या संस्था रजिस्टर्ड आहेत, आपलं योग सिंधू
दर 3 महिन्याला प्रसिद्ध होत आहे. त्याच्यामध्ये लेख द्यावे, त्याच्यासाठी मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना आवाहन करतो. त्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही तुमच्या संस्थेमध्ये जे काय कार्य चाललंय त्याच्याबद्दल एक छोट्या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही वार्तांकन करून दिलं तर ते पण आम्ही आपल्या ह्याच्यामध्ये छापू. जसं आपण बघत असाल की आमचं कैवल्यधामचं असतं, घंटाळ मित्रमंडळचं असतं, त्यानंतर योगा इन्स्टिट्यूटचं असतं, योग विद्यानिकेतनचं असतं, की आम्ही गेल्या 3 महिन्यात काय कार्यक्रम केले, काय विशेष कार्यक्रम केले, त्याची पण सूची तुम्ही दिली तर ते आम्ही प्रसिद्ध करू. आणि लेख एक प्रकारे लिहायला उद्युक्त करा लोकांना, की जेणेकरून त्यांना अभ्यास करतील तेव्हा तो लेख लिहिता येईल आणि लेख लिहून आपल्याला योग सिंधूमध्ये प्रसिद्ध करता येईल. तर पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती करतो की जास्तीत जास्त लोकांनी आपल्या IYA महाराष्ट्र बँकचे सभासद व्हावं. परत आपल्या आपल्या स्तरावरती इंडिव्हिज्युअलवरती व्हावं, संस्था ज्या आहेत त्यांनी रजिस्टर करावं आणि त्याच्या पुढे त्यांना जे काय वेबिनार करायचे, सिम्पोजियम करायचे किंवा 1 दिवसाचं वर्कशॉप करायचंय त्याच्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी मदत द्यायला तयार आहोत. पुन्हा एकदा मी मस्करजींचे आभार मानतो की त्यांनी फार सुंदर विश्लेषण केलं. ऍटलिस्ट लोकांना योग कशा प्रकारे आपण आपलं स्वास्थ्य चांगलं राखण्यासाठी वापरू शकतो आणि स्वास्थ्य बिघडतं म्हणजे त्यांनी त्याच्या डेफिनेशन्स पण आपल्याला सांगितल्या. बारिंग अक्यूट म्हणजे जे एकाएकी उद्भवलेल्या व्याधी असतात त्या सोडून बाकीच्या व्याधी किंवा अक्यूट व्याधी जी आहे ती त्याचा सिरियसनेस कमी झाला, ती क्रॉनिक मध्ये गेली तर आपण डेफिनेटली त्याच्यामध्ये योगाचा उपयोग करू शकतो आणि त्याची सिव्हिरिटी कमी करू शकतो. महत्वाची गोष्ट म्हणजे आजकालचं जे 21व शतक आहे ताणतणावाचं, ज्यामध्ये मोस्ट ऑफ द डिसीजेस आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. 50 वर्षापूर्वी कम्युनिकेबल डिसीजेसचा बोलबाला होता. आता मॉडर्न सायन्सने त्याच्यावरती विजय मिळवला, त्याच्यामुळे आता ते कॉलरा, त्याच्यानंतर देवी वगैरे आता रोग दिसत नाही, परंतु आता नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दिसत आहेत. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटॅक, ओबेसिटी. आणि या सर्व रोगांना कुठलाही रोगजंतूमुळे ते होत नाहीये, परंतु तो मेंटल टेन्शनमुळे, मनोकायिक ह्याच्यामुळे होतो आणि तो आपण योगाच्या द्वारे बऱ्यापैकी नियंत्रणात ठेवू शकतो. आणि आजकालच्या ह्या ताणतणावाच्या शतकामध्ये ह्या सर्व रोगांपासून आपल्याला दूर राहायचं असेल किंवा त्यांना नियंत्रणात ठेवायचं असेल तर योगासारखा सर्व कुठलाच दुसरा मार्ग नाहीये. म्हणून पुन्हा एकदा मस्करजींचे मी आभार मानतो की त्यांनी सुंदर हे करून लोकांच्या मनात एक जागृती निर्माण केली आणि अरे वा, योग पण मला हे करू शकतो. आणि मग ठीक आहे 10 मिनिटं करून बघू. आणि 10 मिनिटं करून बघितल्यानंतर कदाचित त्याला फरक वाटला तर तो मग अजून तुमच्याकडे येईल विचार, अजून काय करू मी, आणि मग आपण त्यांना अजून सांगू शकतो. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद. तसंच जे सर्व लोक ऐकत होते त्यांचे पण धन्यवाद, कारण तुम्ही ऐकायला आल्याशिवाय आमच्या या कार्यक्रमाला काही अर्थ राहत नाही. तरी आपण अजून आम्ही जवळजवळ बहुतेक ग्रुप्सवरती ही लिंक पाठवायचा प्रयत्न केला होता. अजून आपण जेव्हा आम्ही लिंक पाठवू तेव्हा तुम्ही ज्या ज्या लोकल संस्था आहेत त्यांनी त्यांच्या सर्व साधकांकडे ते पाठवा, म्हणजे मॅक्झिमम लोक हजर राहतील आणि ते ऐकू शकतील आणि योगाचे विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील. तर आता आपण हे आजच्या हा महिन्याचा जो वेबिनार आहे तो संपवूया. त्याच्यापूर्वी एक वेळेस आपण ओंकार करूया. पाठीचा कणा ताठ, डोळे बंद, दीर्घ श्वास भरूया. शांत शांत. दोन्ही हात घर्षण करून डोळ्यावर चेहऱ्यावर फिरवून मग डोळे उघड्या. शांतीपाठ म्हणूया. ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांती शांती शांती. हरिओम. पुन्हा आपण पुढल्या महिन्यात भेटूया. पुढल्या महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी असंच एक नवीन स्पीकर आणि नवीन टॉपिक घेऊन. धन्यवाद. हरिओम.